Okay, guys. Okay. Class 8 Science, Chapter 11, Force and Pressure. Yeah, I think Arshia is saying something. I'll come to Arshia. Yeah, Arshia, go ahead. सर एक बार आप मोनोमर बता दीजिए बैकलाइट और मैलामाइन में. ओहो, तूने मेरे को मैसेज भेजा था क्या? यस सर. ठीक है, कब एग्जाम तुम्हारा? सर सॉरी सर कल. तो मैं भी बता दूं, क्लास के बीच में बता दूं. ओके, I think that there are 2-3 people still missing. Okay, Shiv भी आ गया. So Abhinav is here, Shiv, Arnav is here, Arshia is here, Jay is here, Shiv is here. Vansh आ गए? Vansh आ गया, Tasmiya. I think almost everybody is here. Ritvik Chandel is the only one who is missing. Sir, Shikha is here. Sir, I had a doubt. Yeah. Okay, Abhinav. Sir, what is Sir Mossad? What is Mossad? Yes, sir. Mossad is the MOSAD. intelligence agency of Israel. Like we have RAW. जिन लोगों ने बेल बॉटम पिक्चर देखी है अभी उनको पता चल गया होगा. हर एक कंट्री की दो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है. एक कंट्री के अंदर काम करती है, कंट्री के बाहर काम करती है. जैसे अमेरिका के अंदर FBI वर्क्स इनसाइड यूएसए एंड CIA वर्क्स आउटसाइड. इंडिया के अंदर IB वर्क्स इनसाइड इंडिया, CBI वर्क्स इनसाइड इंडिया एंड RAW वर्क्स आउटसाइड इंडिया. Similarly, Mossad has got external intelligence agency called Mossad. जो भी इसराइल के एनिमीज हैं या पोटेंशियल एनिमीज हैं उनको टैकल करने का काम है मोसाड का. ठीक है अभिनव? Yes, sir. ओके, राइट. अर्शिया, I'll tell you that पॉलीमर्स वाला एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं, मैं तेरा मैसेज नहीं देख पाया, बट एनीवे I'll give it to you in the class today. Okay guys, before we go ahead, अच्छा एक मिनट, एक पॉइंट मेरा ये फीस वाला पॉइंट है यार. 5th को फीस आनी चाहिए सबकी. आई डोंट लाइक टू रिमाइंड दिस एवरी टाइम. I have received, इन लोगों की फीस मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है. प्रभगुण, अभिनव, अर्णव, सिया एंड विद ऋत्विक तावरी. बाकी लोग बचे हुए हैं. प्लीज रिमाइंड योर पेरेंट्स. आई डोंट लाइक रिमाइंडिंग दिस. ओके, दिस इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट. गुड इवनिंग सर. या ऋत्विक चंदेल, गुड इवनिंग. ओके ऋत्विक, आप भी पापा को याद दिलाना फीस के लिए. बाकी सबका मैं बता दिया किस किसका है. Okay guys, before we start this chapter, I want to give you an overview of this chapter so that when you read this chapter should be very easy for you. It is not a difficult chapter, it is a very easy chapter. So I will start with what is force. Any pull or push can be called a force. Easy definition, यही नोट्स आपने बनाने अपने नोटबुक में. Okay, now when there is a force may occur with contact and also without contact. The force which must have a contact to work are called contact forces, and similarly this is called non-contact forces. पहले नॉन कॉन्टैक्ट देख लेते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट तो बड़ा आसान है समझना. नॉन कॉन्टैक्ट में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये फोर्स वो है जो कि आप फोर्स को मैं हर जगह F लिखूंगा. वो जो है कि आपने ड्राई हेयर के अंदर
कॉम को रगड़ा या प्लास्टिक की स्केल को रगड़ा और फिर प्लास्टिक के पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लेके अपने हाथ के पास लेके आए, तो पेपर के टुकड़े वो कॉम की तरफ या स्केल की तरफ चले जाते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, electrostatic force, and that force happens because there is different charges between the two particles. Lightning is also example of electrostatic force, but वहां फोर्स नहीं है, वहां तो इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल हो जाता पूरा। देन इज मैग्नेटिक फोर्स, and magnetic object and magnet. Third is gravitational force, जो ग्रेविटी की वजह से। नाउ ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्थ की ऊपर तुम कोई पत्थर फेंको, अब तो कांटेक्ट नहीं है, बट फिर भी दैट स्टोन विल कम टुवर्ड्स द अर्थ। तो दीज आर मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स विल हैव फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में कौन कौन से फोर्स हैं? फर्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स वो है जो अपने उसका विच कॉज चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्फ। मैकेनिकल फोर्स also includes muscular force, or it could be force due to a machine force। एक क्रेन ने किसी चीज को उठाया तो मशीन फोर्स है वो। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, ये ब्रॉडली हो सकता है एक आधा कोई और हो, दैट वी विल सी। दिस वी हैव सीन। नाउ वी लेट अस सी कि एक फोर्स, what all effects can the force have? What can be done by a force? So there are 4-5 things which a force can do. मुझे पता तुम लोगों से पूछूंगा तो most of you will give the right answer just to save the time, since we are approaching exams and we have to cover more chapters in less time. So I'm just telling this to you. Firstly, stop a moving object. Number 2, move a stationary object. Number 3, अच्छा अर्षा मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारी मैम ने बताया है कि इनके मोनोवर? सर बस नहीं इन बताया। दोनों के नहीं बताया सर, मैं कल क्लास में ऐसे मैम से पूछ लूंगी और सबके बताए हैं मैम। ठीक है, बाकी मैं अभी ढूंढ के बता दूंगा, क्लास के बीच में बता दूंगा। ओके सर। मूव ए स्टेशनरी फोर्स। थर्डली, अब देखो एक बॉल आ रही है, फुटबॉलर मेसी के पास एक बॉल आई, अब मेसी उसके साथ क्या क्या कर सकता है? मेसी कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर फुटबॉल रुकी हुई है उसको किक मार के कैन मूव ए ऑब्जेक्ट। थर्डली, चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फुटबॉल आ रही थी, उसको पैर लगा के स्लो कर दिया अपने मस्कुलर फोर्स से या हाथ से, जैसे भी किया। चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फुटबॉल आ रही थी, फुटबॉल आ रही है उसके पास, उसने पैर से अपने स्पीड को कुछ नहीं किया, बस पैर टर्न मारा, हल्का सा पैर से टच किया, डायरेक्शन चेंज कर। फिफ्थली, चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। Okay, now I can ask you guys. One more thing has got left out. What is it? एक और चीज हो सकती है। Sir, may Yeah. Sir, it can change the shape and size of an object. Yes. Let us say तुम्हारे पास कोई, तुम लोग दोस्त खेल रहे हो और तुम्हारे पास डो, आटे की डो हो या चाहे मड की डो हो, किसी फ्रेंड ने फेंका और आपने उसको ऐसे रोका, अपने हैंड मस्कुलर फोर्सेस को रोक दिया, तो वो जो डो जो थी राउंड शेप में थी वो फ्लैट हो जाएगी। तो चेंज शेप, मोस्टली शेप बट समटाइम्स साइज ऑल्सो। तो आपके पास एक बॉल है, आपने उसको पूरा अपने हाथ से दबा दिया, शेप भी चेंज होगी, साइज भी छोटा हो जाएगा।
तो ये तो हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एक बहुत आसान चैप्टर है ये। अच्छा, अब देखते हैं नेट फोर्स किसको बोलते हैं। सो वी हैव into three concepts, and let's go to the fourth one. Fourth thing, what is net force? Net force. Firstly दोस्तों, force is a vector quantity. Force is a vector quantity. इसका मतलब ये है कि जब भी आप बताओगे कि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यू हैव टू गिव द डायरेक्शन आल्सो, which is moving in left to right direction, right to left, north to east, east to west. So direction is must. So what is net force? Let's say there is a force moving 5 न्यूटन. फोर्स की जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन. न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों. एक्चुअली न्यूटन का मतलब यही होता है, न्यूटन इज दिस ओनली, केजी मीटर पर स्क्वायर. 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, एक बॉक्स के ऊपर, एक बॉल के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और 3 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है. सो नेट फोर्स इज 5 न्यूटन minus 3 Newton is equal to 2 Newton, and how? Left to right. This is called net force. सर नीचे वाला पार्ट नहीं दिख नहीं रहा. दिख रहा? थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा. Right. So net force is 2 Newton left to right. स्टेट ऑफ मोशन हो गया, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हो गया, ये सब कर लिया. मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स हो गया कंप्लीट. चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है. मैं सारे के सारे फोर्स भी एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो मैकेनिकल फोर्स, लाइक आई सेड, सो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? फोर्स ऑफ योर मसल्स, फोर्स ऑफ अ क्रेन, force of a car pulling another car. These are all mechanical forces. What is frictional force? तो अभी हमने इससे पहले हमने, आई थिंक वी हैव डन द फ्रिक्शन चैप्टर ना, ये इरेगुलरिटी वाला. रिसेंटली किया है आई थिंक. मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, आई डोंट रिमेंबर कि 9th का सर कराया कर कि रखा है. अभी कराया. सो ये इरेगुलरिटी जो इसके अंदर फंस गई, इसकी वजह से जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स की दो क्वालिटी है. फर्स्टली, इट इज ऑलवेज opposite to direction of motion. And secondly, इसमें हमने डिस्कशन किया था एरिया वर्सेस वेट, एरिया वर्सेस मास या वेट. सो डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट होएगा, एंड मोर वेट is equal to more friction, and more irregular surface means more friction. अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच में आ जाते हैं भैया. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो दिस इज द फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस. एबोनाइट रॉड होगी, एबोनाइट रॉड, उसको किसी एनिमल फर से रगड़ दो आप, एनिमल फर पे, एंड देन इसके साथ पेपर पीसेस,
पेपर पीसेस को ये वो करेगी। तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। अब क्वेश्चन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, वंश तुम भी पूछ सकते हो, ऋतिक चंदेल कोई पूछ सकता है, अर्णव ने पूछ सकता था अभी, लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तुम लोगों को सोचने का मौका नहीं मिल रहा। तुम बोलोगे सर ये तो आपने एनिमल फर से रगड़ दिया, चलो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसी होनी थी हो गई, ये पेपर का तो आपने कुछ भी नहीं किया, ये नेगेटिव कैसे होगा? उसका रीजन मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रॉड ये है आपकी, सपोज करो, और रॉड का ये पार्ट पूरा पॉजिटिव हो रखा है, आपने रगड़ दिया, सरफेस पूरी पॉजिटिव है, उसके इलेक्ट्रॉन चले गए उसमें एनिमल फॉर्म। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो। तो ग्राफ से आ रही है। Yes, sir. अभी ठीक है, इज इट ओके ना? सर आपके माइक से प्रॉब्लम हो रही है। Yes, sir. I'll change the mic. Okay, is it better now? Yes, sir. Yes, sir. All right. So what will happen, guys? When you take this ebonite rod towards a piece of paper, अब पेपर में तो क्या था, पेपर में सब मिक्स था, प्लस माइनस ऐसे ऐसे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तभी तो न्यूट्रल था। What will happen is, because of the force of this positivity, all positive charge will be repelled. पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और जितने इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएंगे बस यहाँ पे। So effectively this part has, this particular side has become negative and this is positive, and then they will attract each other. They will attract each other. So electrostatic के अंदर क्या है, फोर्स के अंदर क्या है, सिमिलर चार्जेस रिपेल, यानी कि प्लस और प्लस एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इसका भी एक फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is dependent upon the charge of first body, charge of second body divided by the distance between them, square of distance between them. Okay, ये हो गया। उसके बाद then I will cover gravitational force. Gravitational force है again, अच्छा, gravitational force is always attractive, always attractive, always attract करता है, repulsive नहीं होता। G is equal to gravitational force is equal to G, gravitational constant, into mass of first body into mass of second body upon distance between them का whole square। इनकी अलग अलग, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 to the power minus 11, और ये इनका जो भी मास है ये है, ठीक है ग्रेविटेशन। नाउ आई कम टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू 10 to the power minus 11, बहुत लंबा वो है, यूनिट लंबी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। उसके बाद अपन आए मैग्नेटिक फोर्स पे भाई। मैग्नेटिक फोर्स इज ओके, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड होता है कौन सा पोल है आपका, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एवरी मैग्नेट हैज गॉट टू साइड्स, नॉर्थ पोल साउथ। अगर मैग्नेट की बात करोगे आप, तो सिमिलर सेम पोल रिपल्स एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट। Secondly, magnetic force is only applicable to the magnetic material, which are 4 of them. There are चार होते हैं,
निक्स बोलते हैं उनको, याद करने का ये मैंने कोड भी बना रखा, निक्स बोलते हैं इसको। तो क्या क्या है, निकल, आयरन, कोबाल्ट एंड स्टील, ये चार फोर्स होते हैं, चार चीजें ही अट्रैक्ट होती हैं। इसके बाद तुम वुड, पेपर या बाकी कुछ लेके आओगे, बाकी मेटल लेके आओगे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और आपकी स्क्रीन ब्लर है। भाई बाकी लोगों को ब्लर नजर आ रही है क्या? नो सर। Yes, sir. नो सर। मेरे को पता चल जाता है एक्चुअली, जब ब्लर होती है मुझे ठीक लग रही भाई। एक काम करना तस्मिया, एक बार लीव करके दोबारा No, sir. ओके। सो अच्छा, अब दिक्कत ये है कि वी कांट सी दीज फोर्सेस, नन, ऑलमोस्ट नन ऑफ दीज फोर्सेस कैन बी सीन बाय अस, ऑलमोस्ट नन ऑफ दीज फोर्सेस कैन बी सीन बाय अस। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब मुझे आई कांट से इट इज अ प्रॉब्लम, बट इट इज अ फैक्ट। सो ओके ओके, Shrika, good evening. So when this magnet is pulling this, I don't think you can see this since it is black in color. So when this magnet, when this pin is being pulled by the magnet, we can't see. We can't see the force. लेकिन छोड़ते ही ये इसको खींचता है अपनी तरफ से। Right. So बस हो गया, खत्म, चैप्टर खत्म। एक मिनट, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट बचा है प्रेशर का, वो फोर्स कर लेते हैं, फिर प्रेशर का कॉन्सेप्ट बता दो। चलो भैया, मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ और क्विकली विल रीड। राइट, श्रिका has joined the last, so let me start with Shrika only. Chapter 11. Shrika, can you read the notes? Yes, sir. हाँ, पढ़ो। Yeah. Force and pressure. In previous classes, it has been learned by us that how an object moves. When a man wants to draw water from a well, then he has to pull the rope attached to bucket via pulley. So we can say that the man applies a force to rope attached to the bucket of water so that it can move and can come out of well. 2. Similarly, a batsman hits the ball by applying a force. Also, a hockey player changes the direction of the moving ball with the applied force. So, if by chance the sharp heel of a woman's shoe falls on the foot, Okay. due due to the force of a woman's weight exerted because all because all her weight falls on a small area of her foot. Again, of the broad heel of a man's shoe falls on our foot. It hurts our foot much less. It is because the force of man's weight falls on large area of our foot, which produces less pressure. So, in this chapter, we will also discuss the various types of forces and their effects. We will also discuss the pressure exerted by solids, liquids, and gases, including atmospheric pressure. Pressure. Okay. Jia, take on point number 3 onwards. Force, a सर आप push or a थोड़ा सा pull. इसके वो बड़ा कर लीजिए। Force, a push or pull. For the opening of a door, we usually have to push a door handle, and for its closing, we have to pull the door handle. So in order to move an object, it has either to be pushed or pulled. A push or pull acting on a body is called force, and the direction in which a body is pushed or pulled is called direction of force. Pushing, pulling, hitting, lifting,
flicking, kicking, etc. are kind of actions in our daily life activities where we usually apply the forces. As a force is applied when we push a table, when we pull a door, when we hit a sir, नीचे. Yeah, when we hit a bat, yeah. When we hit a when we hit a ball by our bat, when we lift a bucket full of water, when a hockey player changes the direction of ball by flicking, and when a football player kicks on the football. Okay. Uh, Sia, point number 5. Yes, sir. Force is due to an interaction. Force between objects is caused by an interaction of one object with another. So, in case if there is no interaction between two objects, then no force can show its effect. So, in order to understand the force due to an sir, 1 minute. ओके, आप वेट करो सिया फिर। ऋत्विक Yes, चंदेल, sir. ऋत्विक चंदेल आप शुरू करें ये पॉइंट नंबर 5 से। Force is due to an interaction. Force between the objects is caused by an interaction of one object with another object. So, in case if there is no interaction between two objects, then no force can be its effect. Okay. No force can show its effect. So, in order to understand the force due to an interaction more deeply, let us try with some examples. Assume that a man is standing behind a stationary car where there is no interaction between the man and the car. So, no force is acting on the car. Therefore, the car does not Does move. not move. Okay. Continue, please. Now, assume that the man pushes the car and the car starts moving, due to which an interaction gets set up between the man and the car. Thus, a force is acting on the car. So, here we can say that if both the objects are capable of applying the force on each other, then the interaction set up between them can be of pushing or pulling. From these examples, we can infer that at least two objects must be interact for a force to come into play. Thus, an interaction of one object with a, another object results in the force between the two objects. Okay, guys. एक चीज और सुनो. Class 9th, you will the same chapter will be there, and there it is called force and laws of motion. There you will learn 3 laws of force. So 3 laws of force. Newton's law of forces बोलते हैं उनको. And first force is law of inertia, second force is law of rate of change of momentum, and third force is the third law is every action has got equal and opposite reaction. So जब भी हम कार को पुश कर रहे हैं, तो कार भी हमें पुश कर रही है. हम कार को पुश कर रहे हैं तो कार हमें पुश कर रही है, तो इसलिए ना तो हम गिर रहे हैं ना कार आगे दौड़ के जा रही है. तो दोनों हम कार धीरे धीरे जा रही है, हमारे साथ साथ चल रही है, लेकिन कार अगर एकदम से आगे निकल गई तो हम तो कार को फोर्स कर रहे हैं, लेकिन कार निकल गई तो हम आगे गिर जाएंगे. तो सपोज करो हम पुश कर रहे हो, आगे बंदे ने एकदम ब्रेक मार दी कार वाले ने, तो फिर हम पीछे की तरफ ऐसे जाएंगे क्योंकि हमारा फोर्स लगना उस पर बंद हो गया. तो ध्यान रखना ये दिस इज कॉल्ड एक्शन. एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. राइट. ओके. Tasmiya, point number 9, exploring forces. Exploring force. Exploring force, the strength of force is termed as its magnitude, which is expressed in SI unit of force called Newton N. So the force which can make a body of 1 kg mass to move at a speed of 1 meter is known as Is known as 1 Newton. is known 1 as Newton. 1 ये मेरे को एक्सप्लेन करना है. आई हैव टू एक्सप्लेन दिस नाउ बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड. होता क्या, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जितने तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी के साथ रहेंगे ना, कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी पकड़ में आएंगे.
ऐसे तो बोल रहा बड़ा वेग सा है 1 न्यूटन फोर्स, कोई बच्चा बोले सर 1 न्यूटन फोर्स है क्या, मतलब हमें पता क्या चलेगा कि 1 न्यूटन फोर्स लग गया, मेजर क्या मेजर है उसका। तो अगर आपको जानना है कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, so there's a very easy trick for this. 1 सर न्यूटन आपकी स्क्रीन फोर्स, प्रेजेंट हो रही। ओके थैंक यू। 1 न्यूटन फोर्स दोस्तों वो फोर्स है a force which can give an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरीबडी नोज एक्सेलरेशन, कितनी स्पीड से जाए वो, जैसे कार को एक्सेलरेशन दे तो कार स्पीड से जाती है आगे फास्ट, कितनी स्पीड से वो स्टोन जाए कि 1 मीटर कवर करे 1 सेकेंड के अंदर, 1 मीटर पर सेकेंड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। अभी सारा का सारा काम स्पेस में करना पड़ेगा क्योंकि अर्थ पर तो ग्रेविटी काम कर रही है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना तो स्पेस में करेंगे और स्पेस में देखेंगे अगर एक फोर्स इतना था कि उसने 1 kg को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दे दी और एक्सेलरेशन वहां चलती रहेगी फिर, क्योंकि वहां कोई दूसरा फोर्स तो उसको स्टॉप नहीं कर रहा, दे दी, तो उस फोर्स को हम 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस विल हेल्प यू इन विजुअलाइज द नेचर ऑफ फोर्स। ओके कंटिन्यू करें प्लीज उसमें। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके थैंक यू। गो अहेड। हाँ Besides the Besides the magnitude of force, the direction in which the force acts should also be specified. It is due to the fact that change in the magnitude or direction of applied force always results into the change in effect produced by the applied force. We can understand these by the following activity. एक्टिविटी छोड़ देते हैं चलो। ओके कंटिन्यू। पॉइंट नंबर 11। If the men apply pushing force together in the same direction on the heavy box, the two forces add up to provide a much bigger force. This bigger force due to which they can move the heavy box easily. If two men are pushing the heavy box in opposite directions, here one man apply larger force and another apply smaller force. The box will move in in that direction where stronger push is applied. Consider the game tug, tug of war. टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर कहते हैं एक रस्सी होती है, बॉयज इधर से खींच रहे, गर्ल्स इधर से खींच रहे, कई बार स्कूल्स में भी कराते हैं, हमारे आर्मी में तो बहुत होता है। हाँ जी टग ऑफ वॉर बोलते हैं उसको। In which two teams pull at a rope in opposite direction. When the two teams pull the rope equally hard by applying equal forces, then the net force acting on the rope is zero, and hence the rope does not move. So we can conclude that the net force is the sum of the two applied forces. If the two forces applied on an object in the same direction, the net force is the difference between two applied forces. If the two forces applied on an object acts in the opposite direction, the net force is zero if the two forces applied on an object are equal in magnitude in the opposite direction. ओके प्रभगुण आप स्टार्ट करें स्टेट ऑफ मोशन। प्रभगुण भाई क्या हो गया, प्रभगुण क्लास में नहीं क्या? प्रभगुण हाँ वी कांट हेयर यू प्रभगुण। Okay, let me change the reader. Then Prabhugun, I'll come back to you. Ritvik Tauri, go ahead. State of motion.
Ritvik. So can you hear me? Yeah, I can hear you now. Go ahead. So speed of the motion से या फिर effect Yeah, speed of motion. Speed of motion. state of motion. As the speed and the direction of motion describe the state of motion of an object. The state of rest is considered to be the state of zero speed. Example, before hitting football, if the ball was at rest, then its speed was zero. An object can be at rest or in motion because both are its states of motion. Effects of force. A force can be experienced only via the effects it can produce in various objects around us. In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. A force can change the state of motion. The speed and direction of motion of an object describes its state Guys, of we have motion. already discussed, एक minute, Ritvik, we have already discussed the so many effects of force, four effects we have said. Same thing is given in a paragraph form, but please remember it in a point form. बहुत आसान है. Yeah, go ahead. So what usually happens when a force acts on an object? To answer it, we should know whether the object is at rest or in motion. So in order to get a required answer, we have to learn the effects of force on the basis of state of object. Okay, continue करना, Ritvik. Force can move a stationary object. A rest rubber ball begins to move when when a force when a force applied on it. Similarly, the player applies the force on the stationary football while taking a penalty kick in a football match. The force applied by player makes the football move towards the goal. Okay. Now जल्दी जल्दी पढ़ ले, हमने सब कुछ कवर कर लिया. We just a matter of reading. हाँ. Okay, sir. Force can stop a moving object. As you place your palm in front of a moving ball, it comes to rest. Similarly, when a cricket player stops a moving ball on the ground, he applies the force to the moving ball. Force can change the speed of a moving object. Assume moving on a bicycle at a certain speed. So if someone pushes the moving bicycle from behind, then the speed of the bicycle increases, and if someone pulls the moving bicycle from behind, the bicycle decreases. Take under the consideration the case when children competing with one another in थोड़ा सा माइक को tire दूर रख. तेरी or आवाज ring. आवाज खराब हो रही है. थोड़ा सा माइक को दूर रख. हाँ. Sir, 8 seconds, sir. सर अब ठीक है क्या? हाँ, better है, much better. Take under consideration the case when children competing with one another in a moving rubber tire or a ring by pushing it with a small stick. Then the speed of the tire goes on increasing as it is pushed repeatedly. Therefore, a force can change the speed of a moving object. Okay. वंश, आप कंटिन्यू करें. Force can change the direction of moving object. Force can change the direction of moving object. As we observed above, activity that the direction of motion of the ball can be changed after it strikes the roller. Similarly, consider the situation of cricket match when a bowler throws a ball towards the batsman, then the batsman hits the ball with the bat and changes the direction of moving ball. Moreover, if we blow air from our mouth on the smoke rising up from a candle, then it changes the direction of motion of smoke. From these examples, we can conclude that the force can change the direction of motion of moving objects. Okay, now size. Yeah. Force can change the shape and size of an object. In the case of the light spring, firstly pull it at both the
both the end due to where the shape and size of spring changes. Here the force applied by hand changes the shape and size of springs. Even when a potter converts kneaded wet clay into pots, the shape and size of kneaded wet clay changes. Here the potter applies a force on kneaded wet clay. These kind of examples give us the idea that a force can change the shape and size of objects. ओके, ये सब छोड़ देते हैं अभी, ये तो बहुत आसान है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे अपन, आई थिंक हो जाएगा। या कंटिन्यू। ओके ऋतिक, वंश आप रुक जाओ, लेट मी जस्ट सी इफ समबडी एल्स इज लेफ्ट आउट। अर्नव और अभिनव दोनों ने नहीं पढ़ा। अभिनव प्लीज रीड। Yes, sir. Force can change the state of motion. So, if a force applied on an object, then it may change its speed, even if the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in a decrease of speed of the object. So, in this way, a change in either the speed of an object or its direction of motion, or both, is described as a change in its state of motion. Therefore, a force may bring a change in the state of motion of an object. ओके, बट समटाइम्स इट सो हैपन कि आप एक बड़ा सा हैवी बॉक्स है और उस पर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा, टस से मस नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है? हमने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, द स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन इट इज हायर देन द फोर्स बीइंग अप्लाइड, that time we cannot move the object static friction will not allow us। so static उसका जो force है that is much greater than our force, और हमारा opposite direction में, तो उसका जो net force होगा वो object का friction force है, which we cannot overcome by our muscular strength। in that case the object will not move। okay, और अभिनव कंटिन्यू करें। वन मोर या टाइप्स ऑफ फोर्सेस, थोड़ा सा छोटा करो। हाँ, या Yes, sir. टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Types of forces. There are different types of forces which are categorized into two groups. In other words, contact forces and non-contact forces. कंटिन्यू करें, एक पॉइंट और पढ़ें, उसके बाद अनु को पढ़ाऊंगा। Contact forces. 23. Contact forces are those forces which come in action only when two objects are in actual contact with each other. In other words, contact forces are the type of forces in which one object physically touches another object. These forces, another object. These forces are further divided into two groups. In other words, muscular forces and frictional forces. Okay. Arnav, muscular forces. Yes, sir. Muscular forces. Assume a boy is hanging from rooftop and crying for help. So, as to save the boy, we need to pull his upward from rooftop. In order to perform this, a force is is exerted by muscles of our arm. In the some manner, when a football player kicks the football, then a force is exerted by muscle of player's legs. So the force which results due to the action of muscles is called muscular force. Both human beings and animals exert muscular force to do some work. We use muscular force in our daily life activities like walking, jumping, climbing, stretching, squeezing, etc. To perform all the activities involving movement or bending of body parts, muscular force plays an important role. The muscular force also acts inside our body to perform various necessary functions required for our survival. In the process of digestion, the food gets pushed through the alimentary canal, which involves muscular force. During breathing, the muscular force enables our lungs to expand and contract while we inhale or exhale air. Many animals, so can you please move down? Many animals exert muscular force to do heavy works like pulling cart, playing, and carrying heavy load. Since muscular force can be exerted on an object if
and only if the body is in contact with object. Thus, a muscular force is a contact force. ओके गाइस, एनी डाउट सो फार? एक जस्ट एक वन वर्ड आपसे पूछना चाहता हूं, जिसको आता है चैट बॉक्स में लिख दे या मेरे को बोल के बता दे. व्हेन आवर फूड इज being pushed down by the muscles of our alimentary canal, that movement is has got a specific word. Anybody knows what is that word? Peristalsis. Yeah, peristalsis or peristaltic movement, both are correct. Peristalsis or peristaltic movement. Who has answered this? Jia. Yeah. Okay, well done, Jia. Okay, अर्शिया, जिया, सिया भाई, तस्मिया, रामगुन, कोई डाउट यहाँ तक? No, वंश, sir, no, sir. No No, doubt, sir. sir, no doubt. बहुत No, sir, बहुत no बहुत doubt. बहुत ऋत्विक, अर्णव, अभिनव, हाँ कोई डाउट तो पूछो, बताओ भाई No doubt, जल्दी. sir. No doubt. No doubt, नो sir. डाउट. चल, Sir, ओके, no राइट doubt. राइट राइट राइट. चलो आगे चलते. मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से इसको खत्म कराएं, हालांकि मुश्किल हो सकता है, बट चलो ठीक है. अच्छा, मेरे को अब चाहिए बंदा थोड़ा सा फास्ट पढ़ने वाला. कौन पढ़ेगा अभी फास्ट? कौन बचा? कौन है अभी? श्रीका बची, श्रीका ने पढ़ लिया पहले. शिव, शिव आप पढ़ो जल्दी से, चलो देखते हैं कितना फास्ट पढ़ते हो. फ्रिक्शनल फोर्स मैं शेयर कर रहा हूँ. शिव, शिव रेडी? सिया आपको भी पढ़ा, बचे हुए आपको भी पढ़ाना मैंने थोड़ा सा. Yes, शिव sir. शिव शिव, बर्ड. इसमें दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं अभी. हाँ चलो कल करेंगे फिर. शिव, ओके, एक काम करो, होल्ड करो, होल्ड. मेरे को वो जो पॉइंट अर्शिया वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ. Arshia, I am explaining that now. Please pay attention. Slightly in detail. Okay, sir. Right. तो हमने अब तक देखा था कि what are the monomers of various. अब तक हमने देखा था रेयन का क्या है, नायलॉन का क्या है, एक्रिलिक का भी मैंने दिया था तुम्हें, और एक और जो थर्ड वाला था पॉलीथीन का, उसका भी दिया था. Now let us see the monomer of Teflon, Bakelite and melamine. ओके, सी टेफ्लॉन का जो मोनोमर है, इट इज कॉल्ड टेट्राफ्लोरोएथीन. टेट्राफ्लोरोएथीन, एंड इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है CF2CF2, यानी C2F4. टोटल बनेगा C2F4. ओके अर्शिया, और स्ट्रक्चर ऐसा है इसका. ओके, अंडरस्टूड अर्शिया? Yes, sir. ओके, सो ऐसा होता है सी सी, और यहाँ एक, क्योंकि मैंने बताया कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 2 यहाँ पे होगी, Screen 1 यहाँ पे. present हो जाए. ओके, वाह, ओके, ये CF4. अच्छा, बैकेलाइट का क्या होता है? बैकेलाइट के मोनोमर जो होते हैं, जो मोनोमर है, वो 2 मोनोमर है जो कि एक चेन बनाते हैं, वन आफ्टर द अदर, सीक्वेंसिंग. प्रोसेस तो बहुत लंबा है, लेकिन जो बेसिक मोनोमर्स हैं वो है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड. फिनॉल क्या होता है? फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH. C6H5OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है. जो मैंने बेंजीन रिंग बनाया, इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं. बेंजीन रिंग में वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH. सो दिस इज कॉल्ड फिनॉल. एंड दूसरा वाला है फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? H2CO. कार्बन का एक एटम होता है, कार्बन का एक एटम होता है, साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम. टोटल 4 वैलेंसी पूरी होगी इसकी. हर्षा, सो बैकेलाइट का मोनोमर Okay, कौन है? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड स्पेलिंग देखना, FORMELDEHYD. और मेलामाइन का जो मोनोमर है वो खाली फॉर्मल्डिहाइड, ओनली फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, मैंने सर मतलब ग्रुप में. बैकलाइट के दो मोनोमर हैं. हाँ, सर बैकेलाइट के 2 मोनोमर है. बैकलाइट के. बैकेलाइट के 2 मोनोमर है टू स्टार्ट विद, देन दे कंबाइन एंड दे मेक समथिंग एल्स. ओके सर. ओके, चलो. ओके, शिव आ गए आप वापस? शिव, शिव शिव की आवाज ही नहीं आ रही. सिया आप कंटिन्यू करो. फ्रिक्शनल Yes, फोर्स. sir. Frictional force. If we stop pedaling a bicycle, then it gradually slows down and stops after covering some distance. Similarly, a car comes to a rest once its engine is switched off. Even a boat moving in water comes to rest if we stop rowing it. So, in all these cases, no force appears to be acting on the objects, but still their speed gradually decreases and they come to rest after some time.
We conclude that an opposing force is acting in all the cases which slows down their motion. So, the force which always opposes the motion of one body over another body is called frictional force or friction. Take an example where a man tries to pull a very heavy box and the box moves slowly. It is due to a frictional force which acts opposite to the force applied. Therefore, frictional force always acts on all moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. So, we can say that force of friction arises only when two objects are in contact. Thus, frictional force is a contact force. Okay. Now, okay, we'll start non-contact forces tomorrow. I explain this to you. जहां अपने को कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक और तीन फोर्स बताए थे मैंने, मैग्नेटिक फोर्स. Guys, any doubts till here? Abhinav, Ritik, Chandel, Arnav, Arshia, Jia, Prabgun, Ritvik, No No, doubt. sir, no doubt. yeah, बताओ भाई, No doubt, sir. any doubts? No, sir, no doubt. Chalo. We meet tomorrow. We'll continue this chapter, try to finish this tomorrow, and then start the microorganism because that is a major chapter. Once more, just remind your parents for the fee. I don't like to remind people about the fee. मेरे को awkward लगता है, but I have to do it because we have to close the accounts. चलो, see you guys. Bye bye. हाँ शिखा. Sir, I have a doubt. Yeah, go ahead. So why does sound produces vibration? That is the only way sound can be produced by vibration. So vacuum के अंदर तो कोई sound होती ही नहीं है, possible ही नहीं है. तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है और मीडियम में Solid साउंड का मूवमेंट होता है, liquid gas. वो वाइब्रेशंस में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में वाइब्रेशंस होता है. ऐसे वाइब्रेशन, जब ये कॉन्ट्रैक्शन, हाई रेयर फ्रिक्वेंसी फ्रैक्शन. पे ऐसा लगता है कि मतलब आसपास की चीजें हिल रही हैं. हाँ, कॉन्ट्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसे चलती है. Okay, sir. चलो, ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय. Sir, good night. हाँ, मेक द नोट्स प्लीज एंड वॉच द वीडियो.